Assalamu alaikum students, how are you all? Hope so you all will be fine. As you know, due to COVID-19, you can't come to school for some days. That's why we arrange online classes for you. Let's start our topic. Today our topic is Naye Alfaz. Today our topic is Naye Alfaz. We have 5 alfaz. 1, 2, 3, 4, 5. First word is Allah. Allah write करेंगे. Then we write तोड़ of Allah. Alif lam al, lam hai la, Allah. This word has 2 sounds. Alif lam al, lam hai la, Allah. This word has 2 sounds. Next word is पैदा. पे ये दाल अलिफ दा, पैदा. पे ये पै दाल अलिफ दा, पैदा. This word has 2 sounds. पे ये पै दाल अलिफ दा, पैदा. Third word is ऊंचा. Let's see how many sounds this word has. Alif ba noon un, che alif cha, ऊंचा. This word has 2 sounds. Alif ba noon un, फिर che alif cha, ऊंचा. This word has 2 sounds. Fourth word is चश्मे. This word has चे शीन चश मीम बड़िए में, चश्मे. This word has 2 sounds. चे शीन चश मीम बड़िए में, चश्मे. 5 word and last one is खेतों. काफ है ये थे ते वाव नून गुन्ना तो, खेतों. This word also has 2 sounds. काफ है ये खे ते वाव तो नून गुन्ना, खेतों. Now I explain you the pattern. First of all, you write Gaf Kaf and put the date on the right side, and you skip the first line and write Naye Alfaz. How you write the Naye Alfaz? You put 3 finger here and write Naye Alfaz. हम यहाँ 3 fingers का gap देंगे. मेरी फिंगर्स तो यहाँ बड़ी हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनकी फिंगर स्मॉल है. आपने अपने हिसाब से 3 फिंगर्स की गैप देना है. देन राइट नए अल्फाज. ओके, नेक्स्ट यू skip the line and put 2 finger and draw the line. Draw this line. Okay, and write here Allah, and other side of the line you write the तोड़. इस साइड पे आप वर्ड्स राइट करेंगे और लाइन की दूसरी साइड पे आप तोड़ राइट करेंगे. सेम लाइक दिस you will write the word. Numbering also should be right. I hope you will understand this topic.